Thank you. Now we are going to begin one of the best programs of this session, this festival, that is management lessons in Mahabharat. Many people think that why management people, what are their role they have in a literature festival. I want to explain one thing, that we have taken Mahabharat, not the management. We have taken Mahabharat, the epic of India, from where you can see how it is the best and and its utility in our social life. In this session, the speakers are, erudite speakers are Dr. Arun Kumar Rath, biodata, Dr. Arun Rath, MSc Physics and a PhD Business Administration, studied in the Utkal University, Delhi University and universities of Birmingham, Bradford in UK. He joined IS in 1973, served as the Joint Secretary, Department of Public Enterprises and Additional Secretary, Ministry of Steel in the Government of India. As the Union Secretary, Minister of Human Resource Development, Dr. Rath contributed to the enactment of a right of children to free and a compulsory education act in 2009, which itself is a historical effort done by one of the proudest area, right to education, during the government of Dr. Manmohan Singh. After superannuation, Dr. Rath has associated with the leading business school of India. Currently, Dr. Rath is the chairman and professor, Center of Corporate Governance, CSR, Sustainability at IIM Nagpur. I request Dr. Rath to kindly come onto the dais. And our next speaker is Dr. Debasis Satapathy. He has come from all the way from Delhi to deliver this speech, talk about the lessons in Mahabharat. Debasis Satapathy is currently serving for NBCC, New Delhi Government of India, as General Manager HR. Previous to NBCC, he was the Global HR Head for Radical Foods Limited, which is welcome, sir. And I also welcome Dr. Jibitesh Rath, who will be moderating the program, today's session. And Dr. Jibitesh Rath is also, I know Dr. Jibitesh Rath since long, and he is one of my batchmates, and we are intimate friends since last more than 30 years. He started his long corporate career in the public sector as the management trainee in his cell after completing his MPhil from prestigious School of International Studies, JNU, New Delhi in 1981. He is a postgraduate both in political science and public administration with a postgraduate diploma in social work from Calcutta University. He is also a law graduate and did his PhD in Human Resource Development from Utkal University. Dr. Rath presently is the Executive Director, ISTD Center of Excellence, Bhubaneswar, and a visiting faculty in many leading management institutes in India. I request Dr. Rath to take the chair. Thank you, sir. And now I hand over the mic to Dr. Rath to continue the proceedings. Thank you. Good afternoon, everybody. Actually, आमे तीन जन स्पीकर मॉडरेटर दी जन स्पीकर अच्छंती एटा महाभारत विषय आम सब माने कोट पिंचु मैनेजमेंट नो बाहर गरम होची आम कोट पिंचु सिंबलिकली मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स किंतु मैनेजमेंट लेसन न कही कि मु कहबी लाइफ लेसन्स आम सार अच्छा डॉक्टर अरुण रथ विषय आप शुणिले वर्सटाइल स्पीकर
देवाशीष सतपथी जे जनरल मैनेजर अच्छा पब्लिक सेक्टर वर्तमान मु तो थी चीफ जनरल मैनेजर एनएमडीसी हैदराबाद मो कह कथा आम 40 वर्ष जीवन मैनेजमेंट कटैचु महाभारत केमती आमको आम तार कौन शिखिलु कौन नहीं ए विषय किछिटा आलोचना हम यार 5 मिनट कहि आज मॉडरेटर सार दुई जन स्पीकर को 20 मिनट पथ डॉक्टर रथ कहे गोटे कन्फ्यूजन हम मुझे जड़े डॉक्टर रथ छोट रथ से बड़ रथ आम सब बाहर थिलु तो प्रवासी ओडिया जनरली सार जो अच्छी अनुभूति स्टील मिनिस्ट्री मुझे काम कर पब्लिक सेक्टर डिफेन्स मिनिस्ट्री रे सीटा आम सी अथॉरिटी इन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्तमान मैनेजमेंट गुरु इन इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर आईएमआई रे थिले से आप भाषा कहले बार जापर डॉक्टर सतपथी बता प्रेजेंट करेन्टली मैनेजर सी जनरल इज वर्किंग दैट नॉट इश्यू यहाँ कि 2 मिनट कही ये बैकग्राउंड कहीं यही साहित्य चर्चा ओडिया लिटरेचर आर्ट्स फेस्टिवल आसला केमता ये तो किसी मैनेजमेंट कभी न थाए कौटी कि आम भाविलु मनुदास कथबार्ता करी ये गोटे वेबिनार होता मुझे कहली सर यहाँ लिबरल आर्ट्स गोटे कनसेप्ट मतलब जाइए अमेरिका 3 वर्ष तले मो पु पढ़ुला कन्भोकेसन होता सी कंप्यूटर साइंस देखिए लिबरल आर्ट्स रे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट यंग लेडीज बॉयज दे आर लिबरल आर्ट्स मतलब बुझीपार हटे लिबरल आर्ट्स आम आर्ट पर जानचु नाच गीत कला संगीत आम जाचे से लिबरल आर्ट्स इज ए वेरी भास्ट कनसेप्ट ये मैनेजमेंट इज ए पार्ट सोशियोलॉजी इज ए पार्ट लिबरल आर्ट्स आसला विप्रो यूनिवर्सिटी बेंगलोर में लिबरल आर्ट्स आसला आज टॉपिक करिकुलम आसला मैथमेटिक्स नहीं पार डांस म्यूजिक नहीं पार फिजिक्स नहीं पार एनी सब्जेक्ट एनीथिंग सो इट इज फिटिंग टू द ओकेजन फर्स्ट पॉइंट टू दिस फेस्टिवल लास्ट पॉइंट हूँ आप शुणी थे समस्ते गोटे कथा अच्छी जहाँ नहीं भारते ताहा नहीं भारते दैट मीन्स भारत जोटा माने इंडिया महाभारत जोटा नहीं सीटा भारत में नहीं सी जो गोटे लाइन आप समस्त जानते सीरियल देखते महाभारत हम पिलादिने चोपड़ांकर घर घर का कहानी से हिंदी जो टाइटल सॉन्ग वेरी इन्फ्लुएंसिंग टाइटल सॉन्ग मुझे विषय को जानी चाहूनी एति खाली कह चाहूँगी एज ए मॉडरेटर आम शुणिला आम सब महाभारत कथा जानते 2 लक्ष तार श्लोक 2 लक्ष तो व्यास केमी लिखिले सी गोटे मैनेजमेंट टेक्निक 2 लक्ष श्लोक लिखे जन लेख सी किए लिखिले आप जानते से गणेश का साहय ने गणेश कंडीशन कौन थी मैं निगोसिएशन कले व्यास एंड गणेश लॉर्ड गणेश टू राइट महाभारत इमेजिन करते से मैनेजमेंट स्टार्ट होती मु कहि नॉन स्टॉप जदि तुम अटकी जीव गणेश कहले मुझे लिखिबिनी आप जाइए बद्रीनाथ जाइए गणेश गुंफा अच्छी व्यास गुंफा अच्छी ऊपर अच्छी शायद बोधे मुझे देखनी कि शुणी ऊपर अच्छी व्यास गुंफा तले गणेश गुंफा बहुत डिस्टेंस 2 किलोमीटर से डिक्टेशन देवे तले ये नॉन स्टॉप लिखे दैट वाज द बैकग्राउंड ऑफ महाभारत लिखाई लास्ट पॉइंट इंट्रोडक्टरी रिमार्क लास्ट पॉइंट आम जो मु टॉपिक को जाऊनी टॉपिक सार आम 2 जन एक्सपर्ट स्पीकर तो मुझे शुणी आप निश्चय खुशी लगे क्वेश्चन आंसर मुझे गोटे क्वेश्चन पचारि ये ऑडियंस मैंने क्वेश्चन आम बेसी आम ऑडियंस को नेबू क्वेश्चन आ गोटे लास्ट पॉइंट है जो भगवत गीता जिते बहुत स्टोरी अच्छी बहुत किसी अच्छी गोटे कथा मुझे कहि जोटा भूलिया कथा नुहे सॉरी महाभारत में भगवत गीता इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ महाभारत 18 पर्व से भगवान निजे कहते मुझे सतर्क करने चाहूँ सतर्क मैंने वार्निंग नुहे इंग्लिश वार्निंग कहती सतर्क मैंने आपन जब विश्वास न करेंगे आपको एंजॉय करें महाभारत को आप विश्वास करेंगे जड़े कृष्ण भगवान थिले सी अर्जुन को कहते से दुर्योधन थिले ये थिले सी थिले राजा पारिवारिक घटना होती विश्वास न कले आप लेसन पाइबे आपंकर महाभारत गोटे फिक्सिशियस इज द लार्जेस्ट द लॉन्गेस्ट टेट्राइज एपिक इन द वर्ल्ड ग्रीस अच्छी सब जगह अच्छी पुराना सब अच्छी एपिक लास्ट बट द लिस्ट रामायण महाभारत कौन फेरे जोड़े आम एपिक अच्छी मुझे रामायण को टच करूनी कि रामायण है गोटे आदर्श जड़े पुरुषोत्तम रामचंद्र आदर्श उपर बट यहाँ हूँ आम कथा महाभारत है आम घर कथा गंडगोल हम ये हम चक्रांत हम ये हम धर्म हम अधर्म अच्छी सब अच्छी आसतु आम शुणा
प्रथम डॉक्टर रथ को कहबी 20 मिनट जे वर्सेटाइल स्पीकर एंड गोटे ब्यूटी ऑफ डॉक्टर अरुण कुमार राथ तुम जानी लास्ट 10 इयर्स से प्रिपेयर्ड हंती एवं टू द पॉइंट कहती विथ ए वेरी स्टाइल तापर देवाशीष गोटे ब्यूटी हूँ आम मैंने शोई पड़े किए कौन हो पड़ो लंच आगु सेसन दे विल बी स्लाइड सार भी स्लाइड अच्छी डॉक्टर रथंकर भी स्लाइड अच्छी रामायण वीडियो क्लिप्स अच्छी सॉरी महाभारत वीडियो क्लिप्स अच्छी आप देखी पिलादिने देखी भारी दैट माने कोविड पीरियड रे आउ थे सब देखी से देखे डिस्कसन हम माने शॉर्ट क्लिप उपर एति कही मुझे डॉक्टर अरुण रथ को आमंत्रण करुच्ची इंग्लीश से कहींपारे कारण मैनेजमेंट लैंग्वेजटा जनरल इंग्लीश माने वेस्टर्न ओरिएंटेड कि इंडियन इथस कर से कहे कहवा भितर से इंग्लीश कहींपारे ओडिया कहींपारे हिंदी कहींपारे सर तापर मुझे जो कही सी कहला सी आसिक कहे आमर देवाशीष तापर मुझे गोटे क्वेश्चन पचारि मॉडरेशन तापर आपण मैंने पचारे दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेशन थैंक यू धन्यवाद जीवितेश बाबू सुधी वृंद को नमस्कार मनु बाबू को नमस्कार समय सरी आसुची तेणु मु सीधा विषय को आसवा चाहूँगी आज जो रखाही विषय ताहला मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम महाभारत संजोग आमे 3 जन अच्छु जो मंच रे आमे हेलु प्रवासी ओडिया बेसी समय ओडिशा बाहर काम करिछु किंतु आम हृदय रे सब बड़े ओडिशा आ ओडिया में आमे समस्ते खांटी ओडिया जद्यपि बहुत दिन आमे बाहर रही गलु आमे लिखिछु मध्य ओडिया रे इंग्राजी रे प्रश्न उठुची महाभारत विषय रे एवं तार मैनेजमेंट लेसन कहीं आमे ए धौली फेस्टिवल बा आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल कथा हबु मोर धारणा मु सरकार थी भारत सरकार शिक्षा सचिव थी एवं मैनेजमेंट प्रोफेसर IIMs रे मो धारणा आमे महाभारत को एवं रामायण को मध्य ठीक रे मूल्यांकन एबे सुधा करिनु आमे केवल तार कहानी सब शुणीचु किंतु तार भितरे जो गूढ़ रहस्य अच्छी तत्व अच्छी आज 21st सेंचुरी रे एकविंश शताब्दी रे तार मूल्य कौन आमे सेटा केबे विश्लेषण करूनु समय आसी तार विश्लेषण करने मुझे जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रे IIMs रे हेली प्रोफेसर IAS रिटायरमेंट पर मु मैनेजमेंट रे अध्ययन करुच्ची अध्यापना करुच्ची अध्ययन मध्य करुच्ची सेतेबेले मु देखिली ये सबू बिजनेस स्कूल रे से माने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट रे मैनेजमेंट पढ़ाउछंती मते आश्चर्य लागला अनेक बिजनेस स्कूल नियम अच्छी जे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल रो जो केस स्टडी ताकू ही पढ़ा पड़ो मो मन रिभल्ट है जे कौन जिते सब नॉलेज विजडम हार्वर्ड स्टैनफोर्ड अच्छी तेणु मु चेष्टा करी आप खुशी हे बर्तमान इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट से माने सब कंपलसरी कोर्स आरंभ कर मोर प्रयास रे से माने बर्तमान इंडियन इथोस एंड हेरिटेज रे मैनेजमेंट स्टूडेंट को कंपलसरी कोर्स पढ़ेबा आरंभ कले तेणु आमे बुझिया उचित जे आमे आमर जो हेरिटेज आमर जो संस्कृति वेस्टर्न रो मध्य नॉलेज भलो ठीक शिखा उचित किंतु आमे आमर जो शिक्षा अच्छी ताको आमे पूरा भूल जाइए कहीं एवं आमे आमे 3 जन यह प्रमाण करना चाहूँ जे केवल साहित्य नुहे महाभारत से विज्ञान मध्य से मैनेजमेंट साइंस मध्य आ वर्तमान आपण
चाहतु बा न चाहतु जीवनर कौन व्यक्तिर कौन काम ना जोटा कि मैनेजमेंट द्वारा प्रभावित न हो आप धौली फेस्टिवल कले ये जो फेस्टिवल से गोटे मैनेजमेंट क्रिएशन आपण मैनेजमेंट जिते प्रिंसिपल ये लगी जो बही लिखुची बही पब्लिश करुच्ची सी मैनेजमेंट साइंस तेणु वर्तमान मनीष जीवन कौन दिग ना जो थे कि मैनेजमेंट प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव आसुनी तेणु मैनेजमेंट बहुत मूल्य अच्छी आम तो बुझा उचित एवं से रामायण महाभारत जो मैनेजमेंट अच्छी शिक्षा ये चर्चा करा उचित नहले आमे चर्चा न कले स्टानफोर्ड हार्वर्ड से चर्चा करेंगे आमे से आमे करूँ द्वितीय कथा जे प्रथम दिन मैं कही जे ऑडियंस रे बहुत कम लोग अच्छा गोटे उदाहरण देवी आपन को मुझे जाइली बर्मिंघम यूनिवर्सिटी गोटे टॉक देवाई टॉक देली देखली मात्र 12 जन बस 12 ओनली 12 मु देखला मात्र मो मन दुख हो गला किंतु आप विश्वास करंतु गोटे घंटा टॉक देला परे से ही 12 जन लोक जहाँ मत प्रश्न पचारे मु भाविली 1200 लोक थे किसी फरक पड़तानी तेणु लोक मैंने केते इच्छुक लोक मैंने केते गुणग्राही ता उपरे निर्भर करुच्ची संख्या उपरे नुहे एवं आपण मैंने जो आछंती प्रत्येक लोक पछरे 1000 लोक अच्छंती आपण बाहर को गले ये कहे तेणु से चिंता करा नहीं लोक अच्छंती एवं लोक आसवे मध्य ना से वर्तमान जो मु लिखी से इंग्राजी रे किंतु मु ताकू जेते संभव ओडिया रे कहबा को चेष्टा करी महाभारत विश्वर बोधे सर्वश्रेष्ठ एपिक स्टोरी बोली कहुब एवं सर्वप्राचीन एपिक स्टोरी बोली कहुब लक्षे रु अधिक ता भितर अच्छी पद्य बा ता भितर अच्छी भार्स एटा लॉन्गेस्ट एपिक पोएम आमे जो शुणुचु ग्रीक रो इलियड ओडिसी ताकू मिसई देले मध्य महाभारत ताठू बड़ आमे एटा केबे जानिनु बा एटा भाबुनु एटा कहा जाए जे जहा नाही भारते ता नाही भारते महाभारत इज द माइक्रोकॉज्म ऑफ इंडिया दैट इज भारत जहाँ महाभारत नहीं ता भारत रे नहीं सेटा बहुत वेल सेड जीवित जो कहले मध्य महाभारत एक स्टोरी नुहे केवल गोटे कहानी नुहे इट कंटेन्ट्स आपण भावंतु देखंतु एस्ट्रोनॉमी ज्योतिर्विज्ञान ता भीतर अच्छी नेम्स ऑफ स्टार्स तारा कॉन्स्टेलेशन लिखाई एवं से सब से समय को निर्धारित कर जियोग्राफी भूगोल इंडिया एंड फॉरेन लैंड्स की डिस्क्रिप्शन ता भीतर अच्छी आम से केवे बुझी पारनु मैथमेटिक्स गणित अच्छी वेपनरी बोधे मॉडर्न डे रो जो न्यूक्लियर वेपन बा केमिकल वेपन से कॉन्सेप्ट सेतबे थिला एवं यूज होइछि मध्य महाभारत युद्ध रे कॉम्प्लेक्स मिलिटरी फॉर्मेशन चक्र व्यूह सब जो डिस्क्रिप्शन रही से सब मिलिटरी साइंस रो पार्ट युद्ध नीति लड़ाଯିब ता भीतर अच्छी फिलोसफी दर्शन साइकोलॉजी सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी रिलीजन एवं शेष मैनेजमेंट एस्पेक्ट आम बेसी जोर दौनु किंतु वर्तमान गवेषणा जो बाहर केते मैनेजमेंट ता भीतर अच्छी आम शिखा उचित ना गोटे एग्जांपल दूची मु बैटल स्ट्रेटेजी से माने वर्णना करचंती अक्षयणी गोटे शब्द अक्षयणी कौन ए बैटल फॉर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ 21,870 रथ 21,870 हाथी 65,610 घोड़ा 1,09,350 पदातिक सैन्य केते फॉर्मेशन ताकर एवं ताकू मिसेई
गोटे रथ को गोटे हस्ती को 3टी घोड़ा को 5टी पदातिक कि साइंस ता भीतर अच्छी जी करुच्ची केते बुद्धि कर पांडव मान 7टी अक्षौहिणी माने प्राय 15,30,900 पदातिक एवं कौरव में 11 अक्षौहिणी माने 24,05,700 एते बड़ सेना था कि कौरव माने हारीगले 11:7 अधा पांडव सेना कौरव सेना अधा कहीं हारे मैनेजमेंट साइंस अभाव था पाखे से हारीगले जदि मैनेजमेंट साइंस देखी था से हुए तो एते शीघ्र हारते there are many management lessons to learn from the winning mindset प्रथम है winning mindset मनुष्यर जीतवा जो दरकार मनोवृत्ति से अच्छी कि नहीं से थिला कौरव पाखे आउ लैक ऑफ स्ट्रेटेजी रणनीति नथला किसी कौरव मान पाखे नहीं लुजिंग माइंडसेट से डे वन लुजिंग एथे युद्ध जीतवा संभव नुहे लेसन नंबर 1 मु दौची 10-12 लेसन देवी राइट लीडरशिप नेतृत्व नेतृत्व नथिले कौन मनुष्य केबे कौन किसी करि परिबनी कौरव मानकर थला गोटे नेता 1 मैन ऑटोक्रेटिक एरोगेंट सी है दुर्योधन गोटे लोक आउ कहीं नथले सी जहाँ कहला सेटा अंतिम से फाइनल किंतु पांडव माने देखिए पांडव मान पाखला चलो ऑन द अदर हैंड पांडव वर्क लाइक ए टीम not individuals they work like a team they are not individual activity they built a synergy गोटे अच्छी साइंस है synergy जे 2+2 can be 10 2+2 may not be 4 से माने 2+2 को 10 करि पारे 5 भाई बेसिकली 5 टा को 50 करि पारे synergy that principle synergy principle द्वारा 2+2 is 10 2+10 भी 100 देखे दे माने हम 5 भाई किंतु synergy को आमे 50 रो बराबर एवं तांकर पाखे थे जड़े लोक तांकर फ्रेंड फिलोसोफर गाइड जी भल मार्गदर्शन करते से शुणुते से कथा कौरव माने तांकर भीष्म द्रोण कर्ण क्या कथा से माने न मानुले केवल दुर्योधन जहाँ फाइनल सो लुजिंग माइंडसेट कृष्ण कौन कले नेगोशिएशन कले प्ले डिप्लोमेसी ड्रू प्लान एंड तांको मेंटरशिप रे काम कले पांडव माने एवं ऑलवेज टुक द राइट डिसीजन नंबर 2 राइट स्ट्रेटेजी कृष्ण इज द मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट of Mahabharat and a crisis manager. The battle of Kurukshetra was about strategy. What is a strategy? If you have no strategy, you are not winning anything in simple life or in a war or anywhere in any human activity. Without strategy, you are not gaining anything. And war रे प्रत्येक दिन स्थिति बदलुला एवं प्रत्येक दिन से बसिक चिंता करते कौन करवा काली कि सेपटे गोटे लोक जहाँ कहला से फाइनल पांडव वन बिकॉज दे टुक राइट डिसीजंस अंडर वाइज लीडर इट वाज कृष्ण हु केप्ट ऑन मोटिवेटिंग अर्जुन एंड पांडवस टू लीड एंड फाइट अगेंस्ट कौरवस एथिकल वैल्यूज आप जहाँ कहतु आजिकल एथिकल वैल्यूज बिना सक्सेसफुल होगा संभव नहीं देखी कौर महाभारत एथिकल वैल्यूज बिना आपण जीति पारे पांडवज आर फाइटिंग फॉर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज देयर ह्यूमिलिटी नम्रता राइचुअसनेस धार्मिकता ऑन देयर साइड
which are valuable in life today, which are forgetting. Before the war commenced, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗଲେ କୌରବ ସାଇଡ଼କୁ ଯାଇକରି ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଯେତେ ଏଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବୟସ୍କ ସମ୍ମାନିତ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କୃପା ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼ାଇ କରୁନୁ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଉପରେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଏ ପକ୍ଷ ବଦଳେଇ ଦିଅ କ'ଣ ହେଲା ଯୁଜୁତ୍ସୁ ଯେ କୌରବ ସିଏ ତାଙ୍କ କୌରବ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ିକିରି ପାଣ୍ଡବ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିଗଲେ ଡେ 1ରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେ ସେମାନେ ରାଇଚୁଆସ୍ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧର୍ମ ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ଜୀବନରେ ମୋଟିଭେସନ୍ ବିନା କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବନି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଜୁନ ହୁ ୱାଜ୍ ଡିମୋଟିଭେଟେଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସରେ ମୋଟିଭେସନ୍ର ବହୁତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ୱିଦାଉଟ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବନି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ଅର୍ଜୁନ ୱାଜ୍ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବିନି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନାଇଁ ଲଢ଼େଇ କର ସେଇଟା ମୋଟିଭେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅଛି ସାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ମୋଟିଭେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ମହାଭାରତ ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କଲେ ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଡୁଇଂ ହ୍ୱିଚ୍ ୱି ଡୁ ନାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ motivation which best exemplified in Mahabharat. Team বা গ্রুপ এবং ব্যক্তি বিশেষ তা ভিতরে কিয়ে মহত্বপূর্ণ মহাভারত পাণ্ডবମାନେ দেখেলে যে টিম বা গ্রুপ বেশি মূল্যবান ব্যক্তিগত নয় ସେମାନେ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଟିମ୍ ହିସାବରେ ଲଢ଼ୁଛୁ କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ନିଜର ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନୁ ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଲଢ଼ୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେପଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଦ୍ଧା ମହାବୀର କି ତାଙ୍କର ନିଜର ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଲଗା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଲଗା ସବୁ ଅଲଗା କେହି ମିଶିକରି ସେମାନେ କେବେ କିଛି ଠିକ୍ କରିବେ କ'ଣ କରିବା ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁବେଳେ 100 କୌରବ କେ ମିଶିକି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଠିକ୍ କର ତେଣୁ ଟିମ୍ଟା ଦେ ଅଲୱେଜ୍ ଇଗ୍ନୋର ତେଣୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ସେଇଟା କୌରବମାନେ କରିପାରିଲେନି ପାଣ୍ଡବମାନେ କରିପାରିଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଓନ୍ଲି 1 person ଇଜ୍ କର୍ଣ୍ଣ ସେ କାହାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲେନି ଭୀଷ୍ମକୁ ନୁହେଁ ଦ୍ରୋଣକୁ ନୁହେଁ କାହାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲେନି କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ ମାତା କୁନ୍ତି ଯାହା କହିଲେ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ଯାହା କହିଲେ ସିଏ କେବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣିଲାନି ସେ କହିଥିଲେ କେବେ ସେ ବି ୱାର୍ଡ଼ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଉପଦେଶ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ କେହି ଶୁଣିଲେନି ଏପଟେ କୁନ୍ତିଙ୍କର ଉପଦେଶ ସେ ଶୁଣିଲେ ତେଣୁ trust and respect are values in management. Commitment and common goal. In Kauravas, all had their own selfish agenda. Pandavas had one common agenda. That is how to win the war because of dharma. Therefore, as I told, Bhishma, Drona, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ସେମାନେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କୌରବମାନେ କମନ୍ ଗୋଲ୍ ଥିଲା କମନ୍ ଗୋଲ୍ରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ 8th ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଲା ବିଲିଭିଂ ଇନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଆଫ୍ଟର ଫେଲ୍ୟୁର୍ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ପଶାରେ ହାରିଗଲେ ସେଥିରେ ହାରିଗଲେ କେତେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ୟୁ ମେ ଲୁଜ୍ ବଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ୟୁ ମେ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ବଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପାଣ୍ଡବ has shown that never give up, never lose. You may lose one battle, but never give up.
the war. And ultimately, they won because they never gave up. Right alliance. पांडव माने वार पूर्वर जेते भल भल एलायंस करें से करुले कि कौरव माने से आम युद्ध आम एसियोर आम एत युद्ध अच्छी आम बेसी सैन्य आम जीतबू राइट एलायंस से माने कले दे आर ओवर कॉन्फिडेंट बिकज सेना बल था डबल बहुत योद्धा थे भीष्म कर्ण द्रोण समस्ते योद्धा तेणु राइट एलायंस माने केबे ट्राए करेनि कि एमाने सारा भारत बोली स्वर्ग जाई एलायंस करुले जे आमको युद्ध जीतवा पड़ो तापर डिसेंट्रलाइजेशन इज ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जे आपण सबू निज हाथ रखिबेनी गिव इट टू योर अदर पीपल गिव योर टीम पांडवस बिलीव्ड इन डिसेंट्रलाइजेशन कौरवस नेवर बिलीव्ड इन डिसेंट्रलाइजेशन women in decision making कुंती द्रौपदी से सब बेले पांडव मान को गाइड करते किंतु एपटे कौन सी कौरव ताक माता को मध्य शुणिले गांधारी को लास्ट प्रिंसिपल है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एटा शेष में कह चाहूँगी जे भल मैनेजर से केवल निजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखिकी छाड़देव यथेष्ट नुहे यू मस्ट अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेस मु सब स्ट्रॉन्ग मोर किसी ना रॉन्ग आप देखिए जो शेष पर्व शेष सीन रे कौन है लास्ट सीन रे हाँ लास्ट लास्ट सीन रे जिते युद्ध अवसान है देखागला आउ कहीं नहांती निज लोक मैंने कहले आम क्या युद्ध कलु महाभारत युद्ध गोटे ट्रेजिक युद्ध कहीं बचिले तेणु पांडव मैंने कहले अरे आम जो मैंने थिले जहाँ बचुलु से चलीगले भीष्म गले द्रोण गले समस्ते गले आ क्या बचू आम जो बड़ भाई कर्ण को जो मारिदे से दुखरे राजनीति कले दुखरे आप जानते परीक्षित को राज्य संभाल दी चलीगले कौन आमे तो पुण्यवान पुण्य करूँ आम स्व देहरे स्वर्गारोहण करूँ आम बहुत भल लोक से भूल कले से जान नथिले जे तांकर मध्य कौन कौन अच्छी वीकनेस से केबे से भावी नथिले एवं सेटा देखागला जो वीकनेसटा कौन थिला देखले जे हाँ गोटे गोटे से हाँ बस देखले जे से स्वर्गारोहण करू करू प्रथमे द्रौपदी पड़ीगले से पड़ीगले केही तांकू चाहिलेनी पछरे तांको पांचपति तांकू थरे बुली कलेनी जारे आम सौधरी पड़ीगला कहीं किसी कलेनी डाकिले कृष्ण कृष्ण मरी जाते कृष्ण नथिले विष्णु होते से सी आसिले एका से मले तापर पर जड़े जड़े पांडव माने प्रथम नकुल तापर सहदेव तापर भीम तापर अर्जुन समस्ते पड़ीगले जड़े जड़े करी आउ जापारे केवल युधिष्ठिर कुकुर सहित जे कुकुर हेले जम निजे स्वदेहरे गले स्वर्ग कि जेहेतु सी भूल काम करते युद्धरे अश्वत्थामा हत कही नर या गुंजरे से ही भूलटे तांको नर्क मध्य देकी जीवा पड़ता कि स्वर्ग पहुँचले सी तो ये माने कहीं पड़े कौन भूल था एत तो भल काम कले कहीं पड़े से माने निजर मैनेजमेंट साइंस अच्छी जो स्ट्रेंथ वीकनेस को करवा विश्लेषण कौन नथिले से माने कौन था द्रौपदी भूल करते कौन भूल कले द्रौपदी और पांचपति किंतु अर्जुन को बेसी भल पाते पांचपति को धर्म अनुसार
समान समान टाइम देवा उचित रेस्पेक्ट देवा उचित से कलेनी नकुल बहुत गर्वी जे बहुत सुंदर देखा से वीकनेस थिला सहदेव वाज एरोगेंट कौन से बहुत विज्ञ ज्ञानी लोक भीम खाऊले बेसी अन्य मान को भावुन विषय एवं अर्जुन वाज ऑलवेज इनसिक्योर केतल कौन हो मन भय सब बेले प्रत्येक एते योद्धा मानकर मध्य थिला वीकनेस एवं से एवं द्रौपदी को आरंभ कर समस्ते वन बाय वन दे फेल डाउन दे कुड नॉट रीच हेवन इन बॉडी तेणु पांचटी लेसन शेष पर्वर मैनेजमेंटर मुदेवी डू नॉट हैव एनी फेवरेट इन ए टीम रे द्रौपदी जहाँ कले अर्जुन मोर फेवरेट से भूल से भूल से पड़गले एवं निजर गुण रूप विषय एत बेसी गर्व करवा उचित मैं नकुल जहाँ करुले एरोगेंट के हम सहदेव मु सब जानी विज्ञ लोक भूल भाव उचित भूल एवं भीष्म निजर सेल्फिश जो थिला गुणटा से पड़गले एवं लास्ट अर्जुन डू नॉट बी इनसिक्योर नेवर बी इनसिक्योर यू आर सो टैलेंटेड व्हाई आर इनसिक्योर से पड़गले एंड युधिष्ठिर एकमात्र व्यक्ति जहाँ पाखे कौन नथिला वीकनेस एक्सेप्ट वन मिस्टेक वन सेमी लाई अर्ध सत्य कहते से जहाँ पनिशमेंट पाइले दिस एपिसोड एक्सप्लेन्स हाउ यू बीन ग्रेट पीपल ओ आई एम ए ग्रेट पर्सन बट योर वीकनेस मैनेजमेंट कौच अंडरस्टैंड वीकनेस फर्स्ट यू विल बी सक्सेसफुल इफ यू नो योर strength and weakness. Now friends, I think I'll stop here. I request thank you sir. Any questions that you have? Actually question आमे पर करबा बर्तन सेकंड स्पीकर दिन भितर डिफरेंस होची स्पीकर ये जनरल डॉक्टर राथ जनरल पर्सपेक्टिव देले मैनेजमेंट लीडरशिप मोटिवेशन टीम बिल्डिंग सिनर्जी ऑल थिंग बर्तमान देवाशीष से कौन करेंगे आई विल रिक्वेस्ट हिम ही हैज सम क्लिप्स वीडियो क्लिप्स फ्रॉम महाभारत डिफरेंट इंपोर्टेंट 6-7 स्टोरी क्लिप्स मे बी 2 minutes 3 minutes क्लिप्स ताऊपरे गोटे गोटे मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस लाइक लीडरशिप लाइक टीम बिल्डिंग से तार एग्जांपल व्हेयर दे फेल व्हेयर दिस सर ताको भाबु सर गोटे पसंद चाहूँ आपन को वेरी इंटरेस्टिंग जो लास्ट स्लाइडटा मु लास्ट मिनट टे संक्षेप आप उत्तर देवे कारण टाइम कम अच्छी जो मैंने गले 5 भाई आने मरीगले जापारे से सॉरी युधिष्ठिर खाली गले दैट मीन्स व्हाट इज द लेसन्स दैट इज ए फेल्युअर एंटायर मैन वर्ल्ड सरला युद्ध सरला कहीं विक्टर कहीं भैंकुश ना पांडव मान अभिमन्यु मरीगले से बेलाल सेन मरीगले द्रौपदी को 5 पुओ भी बाई मिस्टेक न अश्वत्थामा पांडवों को मारिया 5 पांडवों ना 5 पुओं को मारिदे सब शुणी थे आप तेणुक दे आर ऑल्सो लूजर सो नो गेनर अल्टिमेटली सो व्हाट इज द लेसन्स व्हाई विल गो एज ए प्रोवोकेटिव क्वेश्चन व्हाई विल गो फॉर महाभारत व्हेन एवरी बोथ द साइड्स हैव फेल्ड एट द एंड ऑफ द वॉर नोबडी इज ए विक्टर सो व्हाट इज द लेसन्स आर फ्रॉम महाभारत लास्ट वेरी गुड क्वेश्चन रामायण एवं महाभारत संक्षेप में कहि रामायण है ड्यूटीज स्टोरी ऑफ ड्यूटीज कौन तुम ड्यूटी सबु चरित्र राम थ्रू आउट रामायण रे ड्यूटी करचंती कर्तव्य करचंती महाभारत ला स्टोरी ऑफ राइट्स मोर अधिकार एटा स्टोरी ऑफ रामायण स्टोरी ऑफ ड्यूटीज एंड महाभारत स्टोरी ऑफ राइट्स महाभारत रे राइट मागिछन मो एटा हक मुने भी कई कार ड्यूटी करना से भितर विराट डिफरेंस एवं महाभारत इज ए नेगेटिव लेसन कौन करवा उचित नुहे रामायण कहूँ कौन करवा उचित ए आया करवा उचित
डू इट डू इट डू इट महाभारत कहूँ कौन करवा उचित नुहे इट्स ए नेगेटिव लेसन डोंट डू इट डोंट डू इट डोंट डू इट द्रौपदी को हारीगले कि वस्त्रण कर से डोंट डू इट यू हैव लॉस्ट फाइन इवन देन जे लॉस्ट कला जे हारीगला तार मध्य सम्मान अच्छी से भाया पूरा महाभारतटा स्टोरी ऑफ डोंट्स एटा करवा उचित नुहे पशा खेल उचित नुहे वस्त्रण करा उचित नुहे थ्रू आउट इज ए स्टोरी ऑफ डोंट्स एंड स्टोरी ऑफ ड्यूटी स्टोरी ऑफ राइट एवं जहाँ कहले जितेश आज महाभारत रेलेवेंट कहीं जिते बड़ लोकटे हो पचके ग्रेटेस्ट मैन शु रियलाइज ये मोर भी भितर किसी अच्छी वीकनेस मु जाना उचित नहले मु केबे से शेष एपिसोड देखा शेष पर्व ये समस्ते भूल कर जीवन में एत बड़ लोक हो समस्ते भूल कर केवल जो युधिष्ठिर छड़ा समुद्र तेणु गोटे अच्छी स्वोट एनालिसिस मैनेजमेंट स्वोट स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एवरी पर्सन शुड डू स्वोट एनालिसिस मोर स्ट्रेंथ कौन मोर वीकनेस कौन पांडव मैंने से निजर वीकनेस को इग्नोर कले थ्रू आउट एवं जो फल मिलला शेष जे देख तुम एमती कर उचित नाला तुम एत बड़ लोक कि कहीं कल एमती से दंड मिलला यहीटा भाई शिक्षा मैनेजमेंट very thank you sir that new concept not new concept management concept of SWOT analysis has come that is for everybody to have a SWOT analysis of individual. Now I request Debasis Dr. Debasis Satapathy. Actually the beauty of his talk I heard him couple of times last 2 years he has been in this topic teaching to management people management colleges last 2 years some research oriented very few speakers active in this field. Thank you, sir. आपण मानक मोर नमस्कार मोर क्यारियर आज हूँ प्रथम दिन जोठी कि मोर जन्म माटी मु मोर जन्म माटी लोक मुझे कहूँ जाऊँगी जन्म माटीर भाषा कहीं गत 30 वर्ष भितर बोधे एमती भारतर कौन स्टेट ना जो काम करनी किंतु बहुत चेष्टा करची जे जोठी मु जन्म होती जोठी मु पढ़ी से किसी दिन काम करने से सहित मु जहाँ कि रिसर्च करची से विषय में सेयार करने सेटा मत मिल नाला आई आज मनु सार को बहुत बहुत धन्यवाद देवी मनु दास को आउ सार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देवी आउ कहीं मत सार ये इंट्रोड्यूस करछंती सो एटा हूँ मो गर्वर कथा नंबर 1 सेकेंड सार जहाँ कहले महाभारत में आज्ञा एत बड़ गत 2 वर्षर रिसर्च भितर मुझे बोधे 10% भी काम कर 10% मैक्सिमम आउ 10% करने भितर प्राय 110टा 112टा मैनेजमेंट लेसन मु तैयारी करके ऑडियो वीडियो ताकू यूट्यूब रे अपलोड करी जोड़ा आपण मैंने देख पारे मोर चैनल रे और सर्च मारे मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम महाभारत बाय देबाशिष सतपथी राइट सो इट इज सच ए ह्यूज वन एंड से 105टारू आज बोधे आपण सामने मुझे 4टा कि 5टा मैक्सिमम करें क्या बर्तमान गोटे बाजिगला आपन को मुझे जानी यही समयटार लंच पूर्व आ लंच पर लोक मानू फिजिकली एंड मेंटली फिजिकली तो देखिए लोक मानू मेंटली आप देखा भारी डिफिकल्ट सो इट्स ए वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब टू कीप पीपल physically and mentally keep inside the hall. So that's an important thing and it's a what sir was mentioning it's a part of IIM Ahmedabad curriculum now and they're going for a 6 months diploma course in management relation from Mahabharat. That's the beauty of it and more you go deep inside and there are so many management relations which are hidden. You will be feeling proud of it. So that's an important thing which I wanted to mention for the first time. आपण सामने मु इंग्लिश हिंदी आ ओडिया 3टा जाक भाषा कहबी से गोटे गर्वर कथा गर्व लगुच मत कहीं ये अपरच्युनिटी मत केबे भी एपर्यंत मिल नाला से आपण मानक धन्यवाद दूची ओके प्रथम मो जिनसा आपको जो कहूँ चाहूँगी आप देखिए गोटे परिवार रे जदि गोटे पिलाटा बालुंगा होगला पिला को जिते दोष न देवे समस्ते ता बाप को भी दोष देवे माँ को दोष देवे कहीं ना बाप माँ का रेस्पॉन्सिबिलिटी पिलाटा को मनीष करवाटा
सेमती गोटे डिस्ट्रिक्ट रे जमती सर जड़े आईएएस ऑफिसर सी कलेक्टर रही बहुत डिस्ट्रिक्ट रे जदि कलेक्टर कौन सी वीडियो गोटे ट्रबल कला ताले कलेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेमती मोर पिलादिन मन पड़ी मु यूनिट 8 बॉयज स्कूल पढ़ला बेलू से हीराकुद बंध पाखे से गोटे गंडगोल होता प्रबल गंडगोल होता से बिजनेसमैन सब किसी थे आमर के इंजीनियरिंग पिला को मारिक से पानी पकईदे मो मन पड़ी से 85 कथा कि 1985 86 कथा 81 से मो नना को पचारि एजुकेशन डिपार्टमेंट थे जे समस्त चीफ मिनिस्टर को कहीं शोधुंट सेठी तो लोक मैंने सेठी कले ना ना नहीं नहीं ही इज द किंग ऑफ द स्टेट सो जदिओ authority and responsibility can be delegated but accountability cannot be delegated he will be responsible for this so एटा को मैनेजमेंट लेसन सागर लिंक करछि कौन हला ना युद्ध वर्तमान हबा को जाउछि राइट समस्त जानी गलानी जे कौरव और पांडव तांका भीतर युद्ध हबो किंतु कृष्ण को जना पड़ गला ए युद्ध जदि हबो जेते सबु अछंती वीर केही बंचिबे नहीं समस्त मरिबा को जाउछंती बहुत चेष्टा कले तापर कृष्ण आज एम्बेसेडर हे कि गले कोठी ना धृतराष्ट्रंक राज परिवार को सेठी तांकर जेतेबेले समस्त सेठी बसतिले तांक कहिले जे जदि तुम वंशटा ध्वंस पाए ताहले शकुनी को कहीं दोष देबेनी कहना सी जो पशा खेली से ही डिड समथिंग रॉन्ग कहीं ताको दोष देबेनी दुर्योधन किंबा दुशासन को कहीं दोष देबेनी जे से माने द्रौपदी वस्त्रण करथिले काको दोष देबे धृतराष्ट्र तू होचु किंग सेमती शकुनी जो कपट करथिला सेथिबे शकुनी को कहीं दोष देबेनी सब समस्त दोष देबे धृतराष्ट्र को कहना तू होचु किंग सेमती परिवार रे जदि पिलाटी बाळुंगा हे गला ताहले बाप मां को समस्त दोष देबे बाप मां करथिले कोन तेणु प्रथम लर्निंग होची मैनेजमेंट लेसन आम मान समस्त अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मु गोटेर टिके पढ़ी तापर गोटे पढ़ी खाली वीडियो रन कर व्हेन द वार बिटवीन कौरवस एंड पांडवस वाज इमिनेंट एज ए लास्ट रिच अटेम्प्ट कृष्ण वेंट टू धृतराष्ट्र एज ए पीस एम्बेसडर टू हैव ए ट्रस्ट he told Dhritarashtra in the Rajya Sabha that if there would be a war this gathering of warriors would be dispensed if they all would die the history will hold you responsible for the tears shed after the war you are knowledgeable and can create history future would never condemn Shakuni for the treachery since it happened during your tenure history will not ask Prince Duryodhan on why he insulted Draupadi rather you have to give the answer for this right so let's see what's the dialogue which is happening between Krishna and Dhritarashtra run kari first one number 4 friends let me share with you one management learning from Mahabharat the epic is when war between Kauravas and Pandavas was imminent as a last rich attempt Krishna went to Dhritarashtra as a peace ambassador to have a truce he told Dhritarashtra in the Rajya Sabha that if there would be a war, this gathering of warriors would be dispensed. If they all would die, the history will hold you responsible for the tears shed after the war. You are knowledgeable and can create history. Future would never condemn Shakuni for his treachery since it happened during your tenure. History will not ask Prince Duryodhan on why he insulted Draupadi. Rather, you have to answer for that also, since he is your prince. History will never ask Dushasan on why he dared to strip off Draupadi. History will hold you responsible for this incident as well. राज्यसभा में है, वो आज कदाचित संसार की किसी और राज्यसभा में नहीं है, और इसीलिए इस राज्यसभा का दायित्व भी सबसे अधिक है। यदि युद्ध हुआ, तो महात्माओं और योद्धाओं का ये जमघट निस्संदेह ही बिखर जाएगा महाराज, निस्संदेह ही बिखर जाएगा। हे महाराज, यदि ऐसा हुआ तो इतिहास उन सारे आंसुओं का उत्तरदायी आपको ठहराएगा जो इस महायुद्ध के उपरांत बहाए जाएंगे। तार की भलाई है, इतिहास गंधार नरेश शकुनी से यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने द्यूत क्रीड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने भरत कुल वधु को भरी सभा में क्यों घसीट बुलवाया। इतिहास ये भी आप ही से पूछेगा महाराज
क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। इतिहास दुशासन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने दुर्योधन के कहने पर भरत कुल वधु द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की असभ्यता क्यों दिखाई। इतिहास इसके लिए भी आप ही को दोषी, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा महाराज, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा। Let me share with you the management learning from this particular epic. Even after delegating the authority, the CEO remains accountable for the tasks which he might have assigned to his subordinates. The basic principle of delegation of authority is the principle of absoluteness of responsibility. Hence, the good or bad actions of the functional heads would reflect on the reputation of CEO. Even if the organization has the pride of having one of the most competent marketing or sales head, and as a result of which the organization excelled, still the credit goes to the CEO. At the same way, the failure of sales and marketing head reflects on the reputation of the CEO. This principle applies to all the organizations and all the functions irrespective of the business they are into and the level of the leader in the organizational hierarchy. Similarly, the success or failure of the vertical heads in a specific organization also reflects on the reputation of the functional head. Time has seen many success and failures of business corporations, governments, political organizations, international organizations, and history has always remembered their leaders who was heading or currently heading these organizations. Hence, a leader needs to ensure that the team delivers as per the stakeholders' expectations, and any team member deviating from the expectations needs to be brought back to the track and disciplined as well. Otherwise, like history is remembering Dhritarashtra for his biasness and blindness towards his children and incompetency as a king, the history would remember a CEO for all his failures. Thank you. Thank you. So this is the first lesson which I wanted to share with you about the delegation, that's authority, responsibility and accountability. Next one. दिल्ली रे आज्ञा जिते बड़ा आम जुआड़े जाऊ लोक मैंने कहती अच्छा ओडिशा आसु विजु पट्टनायक से थिले ना हाँ विजु पट्टनायक स्टिल पीपल आर रिमेम्बरिंग विजु पट्टनायक फॉर हिज हीरोइक एक्शंस आउ फिलिपाइन्स रो ना पर तांकू हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिली बोधे इंडोनेशिया रो राइट सेति पई एबे भी लोक माने विजु पट्टनायक को मन रखंती आउ टाटा कंपनी रो जदी मोस्ट एथिकल कंपनी हिसाब रे लोक माने तांकू मन पकाउचंती ताले जेआरटी टाटा मन पकाउं तेणु इतिहास आपण को कौन पे मन पकेब दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग जमती मोर जेजेबाबू मन पकाउची से 1917 मसीह काव्यतीर्थ पास करते पाटना यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन करते ओह प्राइड फॉर मी मो बापा मो नना गाँव में स्कूल करते से प्राइड फॉर मी व्हाट फॉर माय सन इज गोइंग टू रिमेंबर मी दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टू आंसर तेणु बर्तमान हूँ मुझे जोड़ा वीडियो देखी सो संजय धृतराष्ट्र को कहूँ इतिहास आपण को केबे भी क्षमा दबनी कहीं आपण पुओ अंध से आपण सब बेसी बदनाम हे यार आउ गोटे लर्निंग भी जदि गोटे डिपार्टमेंट रे फाइनेंस हेड अच्छी ऑपरेशन हेड अच्छी एचआर हेड अच्छी समझ जदि येस मैन हेबे ताले से ऑर्गेनाइजेशन टा पछकु जीवो समबडी हैज टू बी बिटर ट्रूथ एचओडी कड़वा सच एचओडी जण कहिया को पड़िबो ताको जे तू जहा करछु ठीक नुहे ओवर टू द नेक्स्ट साइड Be a role model for your successors. Friends, let me share with you one management lesson from Mahabharat. The epic is Sanjaya was the charioteer of Dhritarashtra and was the first one who narrated the Bhagavad Gita other than Sri Krishna himself. He gave a blow-by-blow account of the war to Dhritarashtra. After meeting Pandavas at Virat Kingdom, he was back to Dhritarashtra to share the message of Yudhishthira. He was quite upset with the love of Dhritarashtra for his sons and feared that the princes who were brought up by him are about to fight and he would see their death very soon. Hence he told Dhritarashtra, the truth not spoken on time is more harmful than a lie. Your actions negate the truth. Your love for your son has wounded your soul. If you don't listen to me in this life, in your next birth, history will criticize you. You cannot escape from the comments of your successors as well.
महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो? क्या कहा युधिष्ठिर ने? महाराज, उन्होंने कहा कि धर्म से उत्तम कोई संपत्ति नहीं और धर्म के पालन में ही संपूर्ण आनंद है। महाराज, इस यात्रा में मैंने भी सोच विचार किया। और उस सोच का परिणाम क्या निकला मित्र संजय? मैंने यह परिणाम निकाला महाराज कि देर से बोला जाने वाला सत्य असत्य से अधिक हानिकारक होता है। तो फिर सत्य बोलो संजय, मुझे सत्य सुनना आता है। क्या है तुम्हारा सत्य? राजन, आपका कर्म आपके धर्म के मार्ग को काट रहा है। आपने अपनी आत्मा को पुत्र मोह के भाले से घायल कर दिया है। आपकी आत्मा लहूलुहान है स्वामी, उसकी सेवा कीजिए। तुम भी मुझे पर आरोप लगाने लगे? नहीं महाराज, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह तो केवल एक विवरण है। यदि इस जन्म में मुझसे नहीं सुनेंगे तो अगले जन्म में आपको इतिहास से यही वक्तव्य बार बार सुनना पड़ेगा महाराज। Now let me share with you the management learning out of this epic. Each of us in our own sphere of actions are not only answerable to the current stakeholders, but also to the future stakeholders. The decisions which you take, the assumptions which you make, and the consequences which we embrace are having 360-degree assessments. This is keenly observed by not only our current reporting managers, peers, and subordinates, but also by our future successors and stakeholders. Hence, a professional who is at a people manager's role would be remembered by the next generation for his good or bad deeds. Even this applies to leaders in all the professions, including HR, finance, marketing, legal, politics, bureaucrats, etc. Some of us would be remembered as architect of the golden era of our organization, and some of us for the reason of its debacle. Choice is yours. Thank you. Thank you. So this was about कभी कभी ताली तो बजा दीजिए कम से कम, right? Sometimes you need to say Satapathy, you did a good job. Okay. So next one is that आपण का ऑर्गेनाइजेशन रो जे डायरेक्टर हेले कि कलेक्टर हेले कि सीनियर मोस्ट बॉस हेले, इफ इज ए स्पाइनलेस दैट्स ए डिजास्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. स्पाइनलेस बुझुंदी ढीला ढाला लोक, वॉइस नहीं, डोमिनेटिंग नेचर नहीं, एवरीबडी टेक देम as granted, so that's a disaster. So time is short, so I'm not going to explain anything. Over to challenges of a spineless leader. If you are spineless, you are a disaster for the organization. Yeah. Third, number 8. Friends, let me share with you one management lesson from Mahabharat. The epic is, after 13 years of Banvas, Yudhishthir sent Panchal's Rajpurohit as his ambassador to Dhritarashtra to ask for permission to come back and get Indraprastha. Before Dhritarashtra could speak anything, Duryodhana fired at the ambassador and told him that he has already broken the Agyatbas of 1 year of Pandavas in the Virat War. Hence, let them go for 12 more years of Banvas once again. Bhishma Pitamaha became quite angry and shouted at Duryodhana and said, "People older than you and who are more knowledgeable deserve respect, and hence do not address them as tum. Moreover, as a Kshatriya, you cannot disrespect the ambassador. Hence, please shut up and sit down." Karna also insulted the Rajpurohit in public. At the advice of Dhritarashtra, Kulguru Kupracharya declared that, as per his mathematical calculations, 13 years is over much before the Virat War, which Duryodhana again discarded with strong arrogance. Then the ambassador said, "To my surprise, this is a unique Raj Sabha where everyone has the authority to speak except the king himself." के पण के अनुसार 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वे पूरा कर चुके हैं. अब यदि उनके ज्येष्ठ पिताश्री आज्ञा दें तो आकर वे आशीर्वाद के साथ अपना राजमुकुट भी ले जाएं. कैसा राजमुकुट पुरोहित? उनके अज्ञातवास को स्वयं मैंने विराट में भंग कर दिया था और उसी के आनंद में युद्ध हार गया था. जाकर उनसे कह दो कि पण के अनुसार उन्हें हमारे कहे बिना ही
12 बरस के वनवास को स्वीकार कर लेना चाहिए था। पांडवों को दूत भेजते लाज तक नहीं आई। गंगा पुत्र भीष्म और कुलगुरु कृपाचार्य क्या कहते हैं? तुम होते कौन हो प्रश्न करने वाले? तुम केवल दूत हो और प्रश्न करना दूत की मर्यादा नहीं है। जो आयु और ज्ञान दोनों ही में तुमसे बड़ा हो, उसे तुम कहकर संबोधित करना भरत वंश के छोटों की मर्यादा नहीं है पुत्र दुर्योधन। किसी दूत का अपमान करना किसी युवराज को शोभा नहीं देता। और कोई जब पिता से कुछ कह रहा हो तो पुत्र का बीच में बोल पड़ना पुत्र की असभ्यता सिद्ध करता है। इसलिए स्थान ग्रहण करो अपना। कुलगुरु कृपाचार्य, आपके उत्तर पर इसका आधार है कि शांति रहेगी या युद्ध होगा। चंद्र और सौर दोनों की गणनाएं ये कहती हैं कि पांडवों का अज्ञातवास विराट युद्ध में युवराज और कुंती पुत्र अर्जुन का सामना होने से पहले ही समाप्त हो चुका था। कुलगुरु, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो। चंद्र और सौर गणनाएं कुछ भी कहती हो, परंतु मैं गांधारी पुत्र दुर्योधन यह कहता हूं कि पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका था, और जो मैं कहता हूं वही सत्य है। सभ्यता धरोहर में नहीं मिलती गंगा पुत्र। आप बड़े भाग्यशाली हैं राजपुरोहित कि आप एक ब्राह्मण भी हैं और दूत भी। यदि ना होते तो युवराज दुर्योधन का यूं अपमान करने पर दंड पाते। जाइए और जाकर सम्राट युधिष्ठिर से कहिए कि वो अभी 12 बरस के वनवास पे चला जाए। उसके समाप्ति के पश्चात देखा जाएगा। यह बड़े आश्चर्य का विषय है राजन कि आपकी राजसभा में केवल आप ही नहीं बोलते, शेष सभी लोगों को बोलने का अधिकार है। Let me share with you the management lesson from this epic. The CEO of an organization needs to be vocal and command over all the functional heads. He needs to be an inspiration leader who should exercise his authority through influence over his direct reportees so that each of them fall in line. None of them should be permitted to override the CEO and communicate the decision to an external representative in his presence. Moreover, each functional head should respect the chair and ensure all decency is being maintained while debating on a crucial issue which has far-reaching repercussions and consequences. The indisciplined functional head who feels that he can grab authority through dominating others needs to fall in line, and CEO needs to clip his wings. The external representative should never get an impression that the organization or the function is being headed by a puppet who has no voice or control over his own team members, and the real authority lies with only one or two functional heads. Hence, Dhritarashtra as a CEO in this case demonstrated a serious deficiency of the competencies of decisiveness, confidence, and the art of influencing. Thank you. Thank you. We can have break one question because out of this, because time is short, I suggest because we have 2-3 important questions. Right. Another 3 slides are there, so launch, we should not stand between you and the launch. Sorry. One question, leadership, these 2-3 slides. Right. On this, hello? The leadership, there are so many leaders, Just you saw Karna, he intervened something, though he is not supposed to. You talk about Dhritarashtra, CEO. So my question is, there are 4 leaders, for example. Lord Krishna, he is a situation leader, once you told. Then he is autocratic, Duryodhana. Then this man, Yudhishthir, he is a Democrat, discussion, participation, talk with wife, talk with brothers. Last is Karna. The Karna has not much authority, he is a laissez-faire type, don't intervene. What Duryodhana, because he is very loyal to Duryodhana, though he has everything as a leader, but he is very blind to Duryodhana, who is a mentor. So what is the best leadership style for Mahabharat? Because there is so many confusion, I am confused.
My 40 years service in management, I am confused who is the best leader. So what do you say? Who is the best? Don't compare Krishna. Krishna is Lord Bhagavan, you can compare. Others, who is the best leader, who can learn some lessons? Okay, rightly you said there are 4 kinds of leadership style: autocratic, democratic, participatory, and laissez-faire. And more or less, all of you know, because I don't want to explain about it. Yes, Duryodhana was autocratic, democratic was Yudhishthir, and Krishna was a mix of everything. He was a situational leader. Based on his leadership style, based on his situation, he was demonstrating his style. I just wanted to link मेरा friend मेरा गोटे सांग घर को मुझे थर जाई थी ता स्त्री suddenly ता मन रे बहुत दुख थिला मो सांग थिला ता स्त्री आसला सी आसिक कहला कहला तुम सांग को टिके बुझौ न सी सिना ऑफिस रे जनरल मैनेजर से घर पर मो स्वामी घर पर मो झीर बाप सी घरे आसिक कौन गोटे मैनेजरियल स्किल देखौचंती मैनेजरियल डोमिनेंस देखौचंती दैट वाज आई विल टेल यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. And that's an eye-opener. I said, yes, we need to change our leadership style based on the situation. At one point of time, I am a father. At one point of time, I am a son. At one point of time, I am a boss in the organization. So same thing, I will answer to you. You have seen Krishna, how he was behaving in different situations. How he ensured that Duryodhana is to be killed. Jangha Prabhupada kahla petiya pai. Narema Gunjare, that was also situation. So he was not having any uniform leadership style all through. The way Yudhishthir was having uniform, Yudhishthir was only uniformity, that is participative. And that's the reason why many ladies in this room will not subscribe the way he permitted the game of dice has to happen and the way Draupadi was also insulted in the Raj Sabha. So that's an important thing which you need to answer. So that's my answer to you. No style is perfect. Only situational style is perfect. Right? Can we move to the next one? Situation I have remembered. Sir, can you tell, like the only sloka in Mahabharat, that is Gita's last sloka, 78, number 78, which is the essence of Mahabharat, the essence of Gita, Bhagavad Gita. That sloka, you told, I just gave a quote, Jatra Partha, that very interesting, because I am not a Sanskrit scholar. Jatra Jogeshwara Krishna, Jatra Partha Dhanurdhara, Jatra Vijay Putadava. So where is Lord Krishna is, and where is Lord Arjuna? Here the Mahatma Gandhi, father of nation, he was following Bhagavad Gita, Vinoba Bhave, Lord Mahatma Gandhi. That means and end, sir, means and end, because purity of means is Krishna, Arjuna represent, but the end represents by Lord Krishna. Because end is important, because there is the vinasaya duskritam. So my point is in management, which is important, means or end. Because management people know you achieve the target at any cost. You do nonsense, you do. Pardon? As you quote, yeah. End doesn't justify the means. Exactly. But in Gita, end justifies the means. Mahatma Gandhi misinterpreted it. Mahatma Gandhi said, end does not justify yes, the means. Correct. Subhash Bose said, end justifies the means. In Mahabharat, Krishna only proved, end justifies the means. So this is the conclusion. The essence of Gita, yeah. This is what you read, Dr. Partha Dhanurdhara. Yeah. What there is the victory is there. But exactly the beginning, Jada Jadahi Dharmasya, Jani Bhavati Bharata, Abhyutpanam Dharmasya, Dadatmanam Sujamya, Paritprana Sadhunan Vinasya Sudhukam, Dharma Samstapanatya Sambhavam. That is the essence of it. Juge, Jada, it refers to time. Not to Dwaraka, not your Juga. Yeah. That may be Bhagavad, that may be Krishna, that may be Kali Yuga, to make any other thing. But with the passage of time, the evil spirits will overpower the good spirits. And when the good spirits will be overpowered by the evil spirits, the bad things will happen. Bad money tends to drive out good money out of circulation. If there is Durjanama, Prabhupada happen, Sadhumana, Asudara, I will come, the truth will come, the dharma will come.
Krishna is the symbol of dharma. Dharma will prevail. এবং ধর্মକୁ প্রিভেল କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଯଦି ଆମେ ମହାଭାରତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଟୁ ୱେର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବାଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ୱାଜ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ବାଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହି ଓନ୍ ହିଜ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ସକରେ ହି ୱାଜ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ he had the objective and he was also successful in fulfilling his objective. Yeah, you are correct. What Arjuna said before the war, for which the Gita was created, Shri Krishna to discourse Gita and defeat it. What Arjuna said, that was also not untrue. That became true after the war. All right. Okay. No, I just told that what you are telling is correct. Right. But very much thankful to Mr. Satapathy because there is some she cited. There are many more features. Right. Many. Thank you. Teachers. And I am also thankful to Mr. Ponda. Yeah, it is not only the Habar, it is not only the Akbar which teaches, they misguide us. Their management model misguide us. The motivation theory of Dr. McGregor, it has failed. It has failed. The American model of motivation, British model of motivation has failed. Money can buy everything. Yeah. The model of America also theory has also failed because it is money and something else. Japanese model theory Z is successful, and we have to evolve an Indian model of management so that our IAM should be successful in managing. That is the very purpose of this session. You are right. That is the purpose of session. We have to learn for our own ethos in Mahabharata. What you told that sloka, that is also, there are so many slokas in Mahabharata which are the essence. I just quoted Mahatma Gandhi because that exactly. Even in our Jagannath temple, there is a management theory. Yes. Oh, that is another story. Another story. Yeah. Economic management model. Right. Can you move, sir? Okay. Can you move? Yeah, please. Okay. Just one point. And means is a permanent, never-ending debate. कौन है महाभारत रे? महाभारत सब नियम युद्ध है सब नियम तैयारी करागला या करेंगे कि शेष को सबू नियम भोगागला दीपट नियम भांगे जिते अभिमन्यु बध है जड़े योद्धा जनक साथ लड़ से 8 जन योद्धा से भांगा नियम सब नियम भंगा है कहीं बर्तमान आमे बर्तमान आज समय का आसवा बर्तमान चली युद्ध चली राशिया यूक्रेन हु इज राइट धर्म क्या पाखे राशिया कौन धर्म मो पाखे यूक्रेन कौन धर्म मो पाखे सो धर्म कौन राशियार धर्म ना यूक्रेन धर्म जेहेतु थिले भगवान श्रीकृष्ण सीए कले धर्म यहीटा से सामने गले कि बर्तमान धर्म कौन राशिया धर्म करुच्ची ना यूक्रेन धर्म करुच्ची एटा गोटे पेरेनियल डिबेट रहिबो सब सर इनसिडेंटली या परटा जो अच्छी ऊपर धर्म ऊपर अच्छी प्रोफेशनल एथिक्स ऊपर एटा विषय में एक्सप्लेन किसी करिविनी क्या टाइम बहुत कंस्टेंट अच्छी मु कट भी कर देलेनी दीटा कही आ जोड़िए सारी क्लोज करी इट्स अबाउट प्रोफेशनल एथिक्स स्ट्रेट वे लेट्स गो टू द वीडियो 16 नंबर 16 very interesting for all of us. Friends, let me share with you one management learning from Mahabharat. This is on professional ethics. Once Krishna asked to Karna that you are an excellent person, you are also a truthful man. You have also never violated what you have accepted as truth. Then how are you in the side of untruthful Duryodhan? You are aware of the truth. Do you believe that the path of Duryodhan is truth? Karna said that truth and untruth has nothing to do with my relationship with Duryodhan. Only love is the basis of our relationship. He is my friend. He is the only warrior who accepted me for what I was. Krishna said that it is true that it is not easy to repay a debt of kindness. What you said is the heaviest debt. But if it is a matter of truth and untruth, religion and evil, right and darkness, is it necessary to pay the debt at any cost? Is it not better to remain in debt for life? हे राधे, आप एक उत्तम व्यक्ति हैं,
सच्चरित्र। आपने जिसे धर्म माना, कभी उस धर्म का उल्लंघन नहीं किया। तो फिर आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? आप तो धर्म की एक एक परत का ज्ञान रखते हैं अंगराज। आप तो यह सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार न धर्म है केशव, और न ही अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। वो मेरा मित्र है। वो मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। क्षत्रियों के समाज ने मुझे केवल इसलिए नहीं स्वीकार किया ना कि मैं एक सूतपुत्र हूं, परंतु दुर्योधन ही एक अकेला क्षत्रिय है जिसने कभी भी मेरे और उसके बीच इस विशेषण की दूरी नहीं रखी। आज से बरसों पहले जब हस्तिनापुर क्षत्रिय समाज के सामने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुश्रेष्ठ मेरा अपमान कर रहे थे, तो केवल दुर्योधन मेरी सहायता के लिए उठा। उसने मुझे अंक का राजा बनाकर मुझे यह अधिकार दिलवाया कि मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं। और यही कारण है देवकी नंदन कि जब कभी उसका मुझे कोई दोष दिखाई देने लगता है तो मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं। इस संसार में केवल दो ही ऐसे प्राणी हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूं, दुर्योधन और वो देवी जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, परंतु वो मेरे लिए उस माता से भी अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म तो दिया, परंतु जन्म देते ही त्याग भी दिया। मैं दुखी होता हूं तो इन्हीं दोनों को दुखी देखकर, और सुखी भी होता हूं तो इन्हीं दोनों को सुखी देखकर। मेरे पास ना अपना कोई सुख है और ना ही कोई दुख। मुझे स्वयं अपने जीवन से कोई लगाव नहीं, किंतु मैं जब तक जीवित हूं मेरे हृदय में इन दोनों के अतिरिक्त किसी और के लिए कोई स्थान नहीं बन सकता। यह ठीक है अंगराज कि कृतज्ञता का ऋण उतारना सहज नहीं। सबसे भारी ऋण यही होता है। परंतु फिर भी यदि बात सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच आन फंसे, तो क्या असत्य, अधर्म और अंधकार का पक्ष लेकर भी यह ऋण उतारना उचित है? क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी ही रह जाना उचित नहीं है अंगराज? Let me share with you the management learning from this epic. Professional ethics are principles that govern the behavior of a person or a group. A professional having talent and superior competency needs to serve for an organization which exemplifies corporate citizenship, transparency, and integrity. The organization's model of business needs to be ethical, complying with the laws of the land. The corporate governance and systems, processes, policies, strategies needs to have adherence to the prescribed norms. Even if the organization has supported a professional at the need of the hour, and if the professional subsequently discovers that the model of business is based on unethical practices, which is adharma, he needs to have self-introspection. He needs to make a choice between the side of dharma or adharma. Since these kinds of organizations do not sustain in the long run, the professional should explore on how to have an early separation or flag off his discomfort. No matter how high, a house of cards eventually collapses. If the professional continues, he will have the same fate to that of Karna. Hence, it's better to die having debt than standing with evil, unrighteousness, untruth, and devil for the entire life. Thank you. Right. So, best example is Tata, which is on right path with truth and is doing wonders. And another company where I served for 5-6 years called Thapar Group, which was having that Chaudhar paper mill and Seva paper mill. That company is almost no more. That's doing very, very bad. Because at one point of time, though these two companies of Odisha were doing well, but the corporate leadership was absolutely in an unethical path. So that's the thing which has happened. Time is a constraint, so I'm skipping two more. That is coaching and mentoring, I'm skipping.
Then I'm skipping also 4 stages of a professional career, how you should be ashram, then you should have 4 ashrams of a professional career. That's brahmacharya, grihastha, vanaprastha and sannyasa. That also I'm skipping. I'm going to the last one, which is dedicated to all the people sitting in this room, those who are having gray hair like me. Never neglect them. They have lots of knowledge. They have soiled their hands. They have seen the ups and downs of the world. They have seen the ups and downs of the organization, and they know what is strategy and how you could guide other people also. So the last one, up chala jana, sesata ko karibo, 37 number ta. Seta hochi on management wisdom. That's the last one which I'm going to show you. Please go ahead. How Bhishma was going, what is the consequence of the Let me share war? with you one management lesson from Mahabharat. This is on management wisdom. The epic is, in the war between Pandavas and Kauravas, Bhishma was injured by Arjuna. In the evening, when he was getting treated in his tent just outside the war field, Duryodhan, Sakuni and Dusasan entered his war room to inquire about his health. Sakuni asked, "Hope the wounds are not so deep?" Bhishma said, "You cannot see the deepest wound. You stand beneath the mightiest tree of India. Where will you go without it? These wounds mean nothing for me." Then he advised to Duryodhan and said, "Nothing is lost yet, my son. Make peace with Pandavas and return Indraprastha to them. This will be good for you as well as for them." Then Duryodhan got irritated and said, "Even if I lose Hastinapur, I will not give an iota of land to them. Now I am certain that I cannot win this war as long as you, says Drona, and Kripacharya are with me." घाव अधिक गहरे तो नहीं है ना ताजश्री? जो सबसे अधिक गहरा घाव है गंधार नरेश, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। भरत वंश के जिस छतनार वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो गंधार नरेश, यदि वो ही नहीं रहा तो तुम कहां जाओगे? हटाओ इस स्नेहलेप को। इन घावों का कोई महत्व नहीं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है पुत्र, उनसे संधि कर लो, लौटा दो पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ। चाहे मैं हस्तिनापुर हार ही क्यों ना जाऊं पितामह, किंतु देने के नाम पर तो मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि तक नहीं दूंगा। और अब तो मुझे विश्वास हो गया है पितामह कि आप आचार्य द्रोण और कृपाचार्य के होते मैं ये युद्ध जीत नहीं सकता। Let me share with you the management lesson from this epic. Wisdom is the virtue of good judgment. It protects a person from falling into complex problems and prevents him from recklessness and hasty decision making that he may regret later. Decisions without wisdom and only based on whims without study, careful planning and analysis of the results leads to disaster. Wisdom in business management can have a profound effect on not only the bottom line but also on those who support the company's mission. Leaders having wisdom take their decisions which are backed by their personal experience and the experience of others, and also take into account what is good not only for the company but also for society as a whole. Here in the epic, Bhishma was having the wisdom of predicting the consequence of Mahabharat war.
Hence, he advised Duryodhana to go for peace treaty in the mid of the war, despite knowing that it will be unpleasant for Duryodhana to listen and is a bitter truth. Similarly, in an organization, the management must listen to the veterans who have soiled their hands and have experienced all the ups and downs and the grind of survival in their professional career. These old hands invariably have differentiating competencies and wisdom of critical thinking, conflict management, problem solving, strategic thinking, and ambiguity management. Hence, the organization, instead of discarding them, ideally should value their wisdom and ensure listening them while taking strategic decisions. Else, they will have the same fate that happened to Duryodhana in the decisive war. Thank you. Thank you. Thank you. So with this, I think I have dedicated this video to all the people sitting here, those who are having gray hair like me. So before moving to my seat, there is a corporate joke which I am remembering about this kind of program. When in the program, the speaker was speaking and ସମସ୍ତେ धीरे धीरे गोटे गोटे लोक रूम रू बाहर के आरंभ कले जीवा पई सो ता भाषण शेष होला बेलू से लोकर देखला बेलू से सब खाली हो जाइए हॉल इज एब्सोल्युटली blank and only 3 people are sitting and they're also listening to the speaker with all the attention. He was very curious जे कौन मोर भाषण रे एते भलो हला जे सब लोग पळै गले ये तीनटा लोग बसचंती सेटू प्रथम लोक जाई पचारला भाई कौन हला कह तते काहे केते भल लागिला तू एपर्यंत बसचू ना आज्ञा कौन हेची ना ये जो प्रोग्राम पाई ना से मनुदास सर से एलसीडी प्रोजेक्टर आ से लैपटॉप सब भड़ा रे आनिचंती आपण मु अपेक्षा करछि केतेबेले सरी हो मु सेडा को नै कि जीवी तेडो आपण शीघ्र भाषण सारंतु आपण सारले मु नै कि जीवी सो सी कहला अच्छा ठीक अछि तापर हेटू आ गोटे लोक थिला बसला ताकू कहला जाई तू काई बसचु कोन सब तक तो पळैले ना आज्ञा कौन है मनुदास सार किसी कम पड़गला सी कहते जे भाषण देला पर जड़े थैंक यू करा पड़ो वोट ऑफ थैंक्स देवा पड़ो तेणु मुझे अपेक्षा करछि आपण भाषणटा केतेबेले सरीबो जे मुझे जाके वोट ऑफ थैंक्स देवी सो प्रोग्रामटा कंप्लीट हम सो ही वाज मोर क्यूरियस अबाउट द थर्ड पर्सन जे कौन है लोकटा कहीं बस समस्ते पड़े गले ये 3टी लोकरू सी पूरा एडे बड़ डाली लाइले आखि करके अनईची हेटू ताको कहला अरे भाई कौन है तू कहीं बसचु कौन आई एम द नेक्स्ट स्पीकर and I was listening very, very patiently to you. Now you sit down. I'll speak for 1 more hour. Thank you very much. Actually, बताना में last session हमें समझ अर्जुन actually हमें समझ अर्जुन मो कह कथा बहुत गुड़े माने क्वेश्चन मन आसुथबो अर्जुन मानकर कृष्ण कहि गले फिल्म देखिले सार कहले any question from the audience because this is not a management lesson, this is life lessons. To me it is life lessons. So already it is created interest, it's a quality, very good questions. Frontline, sir asked anybody, Mr. Udgata, my friend is there, Mr. Misra, so many friends are there and if you don't have a question, I can have a last question as a moderator to any of the speakers, if with your permission. We are all Arjuns, okay? Arjun means we are all karma yogi, isn't it? We are all karma yogi. Karma yogi doesn't mean that what I am doing that is karma. No, that is for your family, for yourself. That is karma. That is not karma yogi. Karma yogi means you that Mahabharat kadachana. You do something which is don't desire any result. I mean, this is dexterity in action. No online Bhagavad Gita. So can you tell that after these management lessons, slides, everything, and introductory remarks, as Karma Yogi, you are also Karma Yogi, what is the lesson you want to give? Because we have already told about lot of leadership, team motivation, everything, even self, understanding self. Dr. Rath told in the last speech, understanding self. Again, self is small s. If you go to capital S, self, Paramatma. I am not going to that pravachan mode, no? Self, Atma, Paramatma, Jivatma, I am not going that. Kindly tell us, sir, after this presentation of last 1.5 hour, what is the message of this Mahabharat to Karma Yogi like us? Arjun, sir, remember, there is no war. I have read somewhere, there is no war of 18 days, no war. Already war is over. Only film was going on by Lord Krishna for 18 days. Already that
11th chapter of Bhagavad Gita, that Vishwarupa Darshan, you already seen. War is over. Arjun, you fight, don't fight. War is over already. 18 days over. Only you have to do some your role. Okay? What I understand. So, everything is over, sir. So, what we will understand then? As a Karma Yogi from this Mahabharat. देखंतु बहुत गुडे स्टेट रे काम कला परे बहुत गुडे ऑर्गेनाइजेशन रे काम कला परे मु देखिली जो ऑर्गेनाइजेशन गुडाक सब धर्म ऊपर जाउचंती से माने ही लॉन्ग रन रे सस्टेन करचंती अन्य माने सस्टेन करू नाहंती सेमती जो परिवार रे देखिबे बाप राती को पैसा धरिक आसे कैश से पिला गुडाक भी भलो होंती समाउ तांको पर इंपैक्ट पड़े तेणु मोर खाली गोटिए लेसन व्हाट इज लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड लेट मी शेयर विथ यू दिस इज अ मैनेजमेंट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस दैट follow the right path. I find even sometimes I'm not able to appreciate what Krishna did. Raja, what Yudhishthira did, except one or two situations, I think that principle really works. In the short term, you may lose something, but in the long term, you will be really gaining. So that's the only thing within 1 minute I wanted to say with you. Now, I'll quote from management again. Jim Collins, a famous management guru, a boy lecture, built to last. Companies around the world, se mane kahi ki survive karanti. Big question. Companies are falling by the wayside. Why companies survived? He is a research. Top 100 successful companies of the world, जो गुड़ा की 100 वर्ष काम करचंती बंचिचंती से देखले दुईटा जिनस अच्छी जोड़ा कि आज बहुत रेलेवेंट एथिक्स एंड सोशल वैल्यूज ये दुईटा उपरे प्रॉफिट पर आसो एथिक्स एंड सोशल वैल्यूज अल्टीमेटली बहिर कनक्लूजन है जे एथिक्स एंड सोशल वैल्यू ये दुईटी फोर्स लॉन्ग टाइम सस्टेनेबिलिटी काम करुच्ची बाकी कंपनी गुड़ा पड़ीजे गड़ीजे द्वितीय कथा जो जीवित से पचारे कर्मयोगी कौन लेसन मु मोर सीमित अंडरस्टैंडिंग कहि जोड़े लेसन गोटे निष्काम कर्म काम करिया पड़ियो से कहले काम छाड़बनी आप न चाहिए काम छाड़बनी काम रहा सहित निष्क्रिय हो बस पारे कि निष्काम कर्म करेंगे प्रथम कथा द्वितीय कथा स्थित प्रज्ञ दुख हो सुख हो स्थित प्रज्ञ यहाँ दुईटा लेसन मु कहूली मैनेजमेंट रे गोटे पढ़ाती अंडरस्टैंडिंग सेल्फ प्रत्येक मैनेजर को कह जाए अंडरस्टैंडिंग सेल्फ से मु कहले आप जोड़तु ये जोड़ी जिनस मैनेजर काम है निष्काम कर्म कर स्थित प्रज्ञ रही ए जोड़े वर्तमान जिते बिजनेस स्कूल अच्छी IIMs अच्छी से आप जानते आज जे वर्तमान करिकुलम रे आसी जाऊँगी जोड़े प्रिंसिपल प्रत्येक मैनेजर को साहाय्य कर निष्काम कर्म स्थित प्रज्ञ या टू बेटर अंडरस्टैंडिंग सेल्फ मो पाखे भाषा नहीं धन्यवाद थैंक यू लास्ट कनक्लूड एक्चुअली मोर गोटे लाइटर भैन कहूँ एवं व्यास जो महाभारत लिखिले जी सी सब लिखि सारापर एत दुखी हो गले कहीं पढ़ुना महाभारत कहीं पढ़ुना 2 लाख श्लोक कौन कराव तांको नारद कही तुम बड़ा भूल काम कल तुम ये बड़ कथा लिखल कहीं पढ़े आम से पढ़ी कथबार्ता कर बसिकी तुम आउ गोटे जिन लेख भगवान उपर श्रीकृष्ण लीला उपर लेख जे मेन एक्टर एक्चुअली महाभारत जे मेन एक्टर ता विषय से लिखलनि ये दुर्योधन कर्ण द्रौपदी सब कौन सब चलती तेणु से लिखिले महाभागवत पुराण महापुराण भागवत आज मुझे सकाल शुणी प्रवचन शुणी रेगुलाली लिखाई गोटे लाइन आज 6ठ स्कंदर प्रथम लिखाई व्यवहार मूलतम संसारम आम तो बिहेवियर मुझे प्रवचन कहूनी मुझे शुणी आम बिहेवियर दैट लाइक द बिहेवियर हूँ वेरी इंपोर्टेंट हाउ वी बिहेव सार कर निष्काम कर्म आज से 6ठ स्कंदर लिखाई निषिद्ध कर्म कर्म केते प्रकार अच्छी
निषिद्ध कर्म निष्काम कर्म सांगे निषिद्ध कर्म अच्छी 6टी अच्छी मुझे कहूँ चाहूनी डिटेल किंतु आपको माने पर दारेश मातृवत माने तमें वेद को फॉलो कर ब्राह्मण को माने सम्मान देव हत्या करनी प्राणी हत्या करके मांस खाए निषिद्ध निष्काम संग सांगे मोर एटा पर्सनाली भावुची किसी निषिद्ध कर्म अच्छी करा पाप जोटा कहते पाप ओडिया विदिन कोट पाप से पाप करनी और निष्काम कर्म अवश्य लिंक सर निष्काम कर्म और निषिद्ध कर्म से लिंक अच्छी मो कह कथा लास्ट को जे भागवत सॉरी महाभारत सांगे आमको अन्य किसी न पढ़ले क्लारिटी आसबनी ना आम कन्फ्यूज होगा लाइक अर्जुन थैंक यू वेरी मच तेणु बर्तमान यही कार्यक्रम जो थिला आमर मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम महाभारत आम ये शेष करुचु यही कार्यक्रम जो मैंने अंशग्रहण कले डॉक्टर अरुण कुमार रथ देवाशीष शतपथी उभय को बहुत धन्यवाद एवं संचालक जीवितेश रथ महोदय को देवाशीष शतपथी महोदय को कहली जो मैंने मैनेजमेंट रो गुरु अच्छा एठार उपस्थित किंतु से मैंने धर्म संपर्क में बा महाभारत संपर्क में एपरी सारगर्भक भाषण देले बा महाभारतर जो नूतन अनुशीलन कले सेटा बहुत आकर्षणीय थिला एवं आमर सबू अधिक समय धरी चली किसी क्षति न था किंतु समयर स्वल्पता एवं भोक कारण आमर कार्यक्रमटा ये शेष करा जाऊ एवं समस्त को मध्याह्न भोजन में सामिल होगापी मु अनुरोध करुच्ची एवं आमर पैनलिस्ट मान को आउ थे धन्यवाद। मनु बाबू हेले जड़े इंग्राजी कहते लेजेंड कौन ता ओडिया हम किंबदंती पुरुष मनु बाबू किंबदंती पुरुष मनु बाबू। This whole session was powered by Indian Oil and sponsored by Coal India Limited.